Now let us move to our most important part, which is the numerical problems part. अब हम ये समझ चुके हैं कि हैमिंग कोड क्या होता है, हैमिंग कोड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है. सो अब हम तैयार हैं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर 1. So this is our problem number 1, which has been given to us. We have been set a bit word 0101 is to be transmitted. Construct the even parity Hamming code for this data. Right? हमें इस क्वेश्चन में एक बिट वर्ड दिया हुआ है 0101 जो कि सेंडर ट्रांसमिट करना चाहता है रिसीवर को, एंड हमसे इस बिट वर्ड के लिए हैमिंग कोड की कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा गया है. राइट? So now let us begin with our solution. What we will do, first of all we will write the Hamming code format. This is the Hamming code format. ये मैंने आपको already explain कर दिया है. राइट? एंड जो बिटवर्ड हमें दिया था 0101 उसे हमने अपने हैमिंग कोड फॉर्मेट पर प्लेस कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 0 1 0 एंड देन 1. राइट? These three positions are for the parity bits. Now we will start finding the values of the parity bits, and जब हम parity bits की values को find out करके fill कर देंगे, then हमारा हैमिंग कोड complete हो जाएगा जो कि sender transmit कर सकता है receiver को. Right? So now let us find the value of parity bit P1. P1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था हम कौन से बिट्स को चेक करेंगे, P1, D3, D5 एंड D7. राइट? एक बिट चेक करेंगे, एक बिट छोड़ेंगे, एक बिट चेक करेंगे, एक बिट छोड़ेंगे, एंड सिमिलर फैशन में. ठीक है? सो नाउ द सीक्वेंस विल बी P1, D3, D5 एंड D7. P1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, D3, D5, D7 की वैल्यूज है हमारे पास 1 0 0. राइट? सो इस ग्रुप को इवन पैरिटी सेट करने के लिए हमें P1 की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा 1. Then the total number of ones in the group will be even. Right? So we will set the value of the parity bit P1 to 1. Right? So we have decide P1. P1 sets the parity of bits P1, D3, D5 and D7. As D3, D5, D7 equals to 1 0 0, we have to set P1 equals to 1 in order to have the even parity. Right? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ सिमिलरली हम P2 और P4 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी विल चेक P2, D3 एंड देन वी विल स्किप 2 बिट्स एंड देन वी विल चेक दीज 2 बिट्स. राइट? सो द सीक्वेंस ऑफ बिट्स विल बी P2, D3, D5, सॉरी P2, D3 एंड देन D6 एंड D7. राइट? P2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वी विल चेक the D3, D6, D7. We have 1 1 0. Total number of ones are 2, so we have to set the value of parity bit P2 to 0 in order to have the even parity of the group. Right? Similarly for P4 we will check 4 bits and then skip 4 bits. हमारे पास यहाँ पर 4 bits हैं यही वाली, so P4 की वैल्यू नहीं है हमारे पास. We have D5, D6, D7. इस ग्रुप में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है बिकॉज हमारे पास केवल एक ही वन है. सो वी हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ द पैरिटी बिट P4 टू 1 इन ऑर्डर टू हैव द इवन पैरिटी ऑफ दिस ग्रुप. राइट? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो दिस इज द सोल्यूशन दैट आई हैव रिटन फॉर यू. डिसाइडिंग P2. P2 sets the parity of bits P2, D3, D6 and D7. As D3, D6, D7 equals to 1 1 0, we have to set P2 equals to 0 in order to have the even parity, and similarly we have done for parity bit P4. Right? And hence after finding the values of the parity bits we have hence binary value after encoding or complete code word that the sender will transmit to receiver will be 0 1 0 1 1 0 1. राइट? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने हैमिंग कोड की कंस्ट्रक्शन को इस प्रॉब्लम में किस तरीके से किया है. नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर 2. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 2 विच हैज बीन गिवन टू अस. ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी सॉल्व करी है. राइट? सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ
आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम, मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, राइट, बट आई वॉन्ट कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करें बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी सॉल्व करी है, राइट. So now I am going to disclose the solution to this problem, but before watching the solution, please try this problem yourself, right? Pause this video and try the problem yourself. This is the solution to this problem, right? You can refer the solution from here, right? This is in continuation with the problem, and this is the final Hamming code or the complete code word that the sender will transmit to the receiver is 1010101, right? So now let us move to our problem number 3. So this is our problem number 3. We have been set a bit word 10101111 is to be encoded using an even parity Hamming code. What is the binary value after encoding? So बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, राइट, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, राइट, बट लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम, राइट. सो हमें ये बिटवर्ड दे रखा है जो कि सेंडर ट्रांसमिट करना चाहता है रिसीवर को, राइट. सो दिस इज 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 बिट्स हैं, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हैमिंग कोड फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर अपना हैमिंग कोड फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, राइट. एंड देन जो हमें बिटवर्ड दे रखा है हमने उसे फिल कर लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 10101111. Rest of the positions are for the parity bits. So now let us start calculating the parity bits, right. First let us calculate the value of the parity bit P1, right. What we will do, we will check one bit, skip one bit, check one bit, skip one bit, and so on, right. So we have P1, D3, D5, D7, D9, D11, right. So we have 1 1 1 0 and then 0. So that means in this sequence the total number of ones are 3 and 3 is odd. So what we will do, we will set the value of the parity bit P1 to 1 in order to have the even parity. So we will write here P1, right. So we have decide P1. P1 sets the parity of bits P1, D3, D5, D7, D9 and D11 as D3, D5, D7, D9, D11 equals to 111100. We have to set P1 equals to 1 in order to have the even parity. I hope आपको clear हो गई होगी ये बात. So now similarly let us find the value of the other parity bits P2, P4 and P8, right. So P2 के लिए हम क्या करेंगे, we will check 2 bits, skip 2 bits, check 2 bits and skip 2 bits. So what we will do, we will check P2, D3, D5, D6, D9, D10, right. So we have 1 1 1, sorry, so we have 1 1 1 and then 1 0, right. So we have total 4 number of ones, total number of ones are 4 which is even. So we have to set the value of the parity bit P2 to 0, right. This is exactly the same. So now we will do for P4, we will check 4 bits and skip 4 bits, check 4 bits, skip 4 bits, right. And for the P8 we will check 8 bits and then skip 8 bits. This is pretty simple, right. I hope आपको अब तक काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा. So now you can do this yourself. I'm going to show you the solution. So this is how we have done. You can refer it from here, right. I am sure आपको समझ आ गया होगा अब तक, right. And this is the answer, right. The binary value after encoding or the complete code word will be this, right. You can match your answer, right. So now let us move to our other part of discussion, which is detection and correction of errors in Hamming code. हमने ये सीख लिया है कि हैमिंग कोड की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाती है, राइट. अब हैमिंग कोड की कंस्ट्रक्शन कर ली, देन सेंडर रिसीवर को ट्रांसमिट कर देगा अपना हैमिंग कोड. अब रिसीवर
हैमिंग कोड को रिसीव करने के बाद उसमें से एरर्स को किस तरीके से डिटेक्ट करेगा एंड देन अगर उसमें कोई एरर हुए उन्हें किस तरीके से करेक्ट करेगा. सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट पार्ट.